Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So let's get started with very much kind of a repetition of what we did last time, because the concentration for the last few lectures has been on the single item of subscription, and today the plan does not change, it is very much the same. So आपके नोटबुक्स में या आप जहाँ पे भी लिखते हो, होपफुली नोटबुक होना चाहिए. सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला आप ऊपर लिख लीजिए, और ये जो लेजर है वो प्लीज़ डेफिनेटली बना लीजिए. एंड इट्स माई वेरी डियर रिक्वेस्ट, लेक्चर्स को प्लीज़ देखना ही मत, बिकॉज दैट इज़ ऑफ नो यूज़. लेक्चर्स को देख के या तो साइमल्टेनियसली तभी के तभी लिख लेना, या तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद में. बट एवरी प्रॉब्लम, छोटा या बड़ा, that is solved here, please note it down in your notebooks. And like the announcement at the very beginning and the reminders at the beginning state, that the PDF of the question and answers and all the workings will be available on the Telegram platform at the end of the chapter. Okay, so hoping ये दोनों काम आपने कर लिया है, और ये हमारा आज का illustration का question है. From the following extracts of receipts and payment account and the additional information, compute the amount of income from subscription. Last time मैंने बोला था हाथ में 1 लाख आया, बट देन वो ऐसा नहीं है कि हमारी जेब में जाना चाहिए. मतलब जो रिसीव्ड है वो इनकम होना कंपलसरी नहीं होता. ऐसा क्यों है? क्योंकि कभी कभी दूसरों की कमाई भी हमारे हाथ में थामी जाती है. इट डज हैपन दैट somebody else, मेरा दोस्त अवेलेबल नहीं था, वो ऑफिस नहीं आया, उसका पगार मेरे हाथ में दे दिया ताकि मैं जाके उसको डिलीवर कर सकूँ, तो वो पैसा तो हमारा नहीं होता. हाँ, वी हैव टू फाइंड आउट कि जो कैश मिला है उसमें से हमारा इनकम कितना है. सो अबाउ इट सेज, एंड शो हाउ दे वुड अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 एंड द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में मैंने इसका प्रेजेंटेशन नहीं किया, वो काइंड ऑफ एज अ होमवर्क में आपके लिए रख दूंगा. आई विल टू द एक्सटेंट पॉसिबल हेल्प यू ओरली इन टेलिंग यू कि क्या चीज़ बैलेंस शीट में कहाँ पर आना चाहिए. आप कोशिश कीजिए. इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स मैंने डेफिनेटली बैलेंस शीट ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों सॉल्व किया है. ओके, सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट. राइट नाउ दिस इज फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2015. अच्छा, सो दिस इज अ लिटिल डिफरेंट. तो उससे क्या होता है? ये होता है कि करंट ईयर हो गया 14-15, लास्ट ईयर था 13-14, एंड नेक्स्ट ईयर 15-16. I repeat, above you can see there are two balance sheets. One is the opening balance sheet and the other is the closing balance sheet. And in both the balance sheet, very important, you have
subscription received in advance and above also, and subscription receivable. Please note, very important, मैं ये पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, काइंड ऑफ एज अ होमवर्क असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, कोशिश ज़रूर करना. हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट में ये जो रिसीवेबल है ये लास्ट ईयर का रिसीवेबल है, और ये लास्ट ईयर्स सॉरी current years received last year. And when you look above, this receivable is for the current year, and just opposite, okay, it is next year's received in the current year. Okay, तो ये चार चीजें is the presentation that you have to do in the balance sheet. What I am doing is showing you the presentation in the income and expenditure account. The question for today is this: receipt and payment account. Receipt side, total receipt 42,000. Now what am I going to do today? मैं ये जितना presentation है ये simultaneously formula में किधर आता है, ledger में कितना आता है. Okay, because previously मैंने पहले formula ख़त्म किया है and then found out the income and found then the same income in the subscription account. तो today for better conjunction and relationship कि formula में कहाँ पे आता है and ये ledger में कहाँ पे आता है. So hopefully you have a better understanding because it will look on a little bit of a better manner. So question again, 42,000 के सब्सक्रिप्शन में आपको लास्ट ईयर का कितना मिला, which is 13-14. Please look there, 7,000, current year का 30,000 and next year का 5,000. The remaining story, subscription outstanding on March 31, 2014. This is the last year. Okay, तो लास्ट ईयर को आपको 8,500 मिलना था, उसमें से मिला कितना, इफ यू नोटिस अबाउट 7,000. सो लास्ट ईयर का पेंडिंग है, रिसीवेबल है 1,500. दैट डज मैटर. ओके, देन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, टोटल सब्सक्रिप्शन, टोटल outstanding on March 31, 2015. The first point is outstanding for the last year and the second point is total for the current year. Look at the number 18,500. You have to understand कि ये 18,500 जो है ये टोटल है. You may say sir टोटल 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 बोल रहे हो, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर क्या ध्यान देना है हमको, क्योंकि लास्ट ईयर का आपको 8,500 मिलना था एंड यू ओनली रिसीव्ड 7,000. तो लास्ट ईयर का 1,500 पेंडिंग है. And this second point says that the total receivable is 18,500. इसमें लास्ट ईयर का 1,500 है, टोटल वर्ड यूज किया है. Pay attention. And the remaining will be receivable for the current year. I repeat, that is the googly in this particular question. Okay, last question में there was members को multiply करके somehow we found out the receivable for the current year. आज इस क्वेश्चन में वो नहीं दिया. ऑब्वियसली ना, इन अ क्रिकेट ओवर देयर आर 6 बॉल्स, एवरी बॉल कैन गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. सो ये इसमें थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन का बॉलिंग किया है. एंड द थर्ड पॉइंट, इट सेज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. नाउ प्लीज नोट, दिस इज एडवांस रिसीव्ड बट कब 31st March 2014. दिस इज एडवांस रिसीव्ड इन द लास्ट ईयर फॉर द करंट ईयर. ओके, सो इट्स बेसिकली अ फॉर्मूला. इट्स अ प्रॉब्लम जहाँ पे जितनी वेराइटी आप सोच सकते हो, एवरीथिंग कैन कम राइट नाउ एट द वेरी बिगिनिंग. कि ओपनिंग, ओके, आपको कितना टोटल सब्सक्रिप्शन मिला. तो इफ यू डू पे अटेंशन अबाउट 42,000 इज व्हाट यू हैव रिसीव्ड. हियर गोस. तो राइट अबाउट 42,000 is what you have received, and then here cash received 42,000. Okay, then in this लास्ट ईयर का आपको कितना मिला है. वेल, लास्ट ईयर की कहानी पहले समझ लो. दैट 8,500 was the total receivable. 7,000 is received for last year. So the pending receivable of last year is 1,500. Now these are all to be placed in different positions. तो पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट जो यहाँ पे आ रहा है. लास्ट ईयर का टोटल रिसीवेबल 8,500 रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर. सो वो अबाउ, ओके, सो हियर रिसीवेबल 8,500. नाउ हाउ मच हैव यू रिसीव्ड? 7,000 आपको मिला. ओके, नाउ
this 7,000 is what will come in L above, received for the last year, and the remaining is the pending receivable 1,500, ये वाला 1,500 जहाँ पर मेरा अंगूठा है. ओके, ये 1,500 आपको कहाँ पे लिखना है, प्लीज नोटिस हियर, लास्ट ईयर का 1,500. सो आई रिपीट, दिस इज रिसीवेबल बट नॉट द टोटल. टोटल अलग है, वो मैं इसके बाद में दिखाने वाला हूँ. बट राइट नाउ दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ 8,500 वॉज द टोटल रिसीवेबल, वो आ गया ओपनिंग बैलेंस. 7,000 इज रिसीव्ड, वो आ गया रिसीव्ड ऊपर एल में, एंड 1,500 इज रिसीवेबल, दैट इज हियर. ओके, ये पुरानी कहानी, आगे की कहानी. ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर का यू हैव रिसीव्ड 5,000. सो अबाउ नेक्स्ट ईयर का देख लो, एंड इट इज advance for the next year received in the current year. So here if you can just please pay attention, 5,000. okay, तो this is current year में जो advance मिला है अगले साल के लिए. Then anything more? Well, the total, that is point number 2, the total receivable was what? The total receivable is 18,500. 1,500 in that is for the last year. तो current year का receivable कितना है? That is what the question arises. Okay, now in this, अगर आप थोड़े आगे ध्यान दो तो above this year's received last year में कितना आया है? 4,000. Question mark, ये कहाँ से आया? Well, point number 3. Subscription received in advance, but then as on 31st March 2014, मतलब last year में advance मिला था current year का, therefore we call it this year's received last year. Now the placement is in the formula in T, but here in the first line if you see balance brought down, opening liability, received, advance received during the last year for the current year, तो यहाँ पे आ गया वो 4,000. okay, above. Okay, now the remaining calculation of what do you call कि current year में आपको advance मिला है what do you call next year का. Okay, so here goes. Receivable above कैसे आता है? Pay very careful attention. The question says, where is the question? Point number 2. Total subscription outstanding on March 31, 2015, 18,500 total. Here, total 18,500. This is 1,500 last year का receivable. 18,500 मैंने लिखा भी है total because वो word important है. 18,500 में अगर 1,500 last year का receivable है तो current year का कितना होगा? Well, 1,500 निकाल लो. ओके, ये मैं चक्कर आके जैसे ऐसा उंगली रखा हूँ जस्ट टू पॉइंट आउट. हाँ, करंट ईयर का 17,000. व्हाई वाज दिस सो इम्पोर्टेंट? करंट ईयर का 17,000 बिकॉज दिस 17,000 ऊपर जो आ रहा है ना रिसीवेबल, इट इज द बैलेंसिंग फिगर, इट इज काइंड ऑफ अ बैलेंसिंग फिगर. 17,000 ऊपर आएगा 17,000. सो दिस वाज द डिफरेंस जो ये क्वेश्चन में डाला था. ओके, हर पॉइंट में कुछ ना कुछ उन लोग ने मांगा तो पुराना ही चीज़ है, बट जो प्रेजेंटेशन है और जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो थोड़ा उन्होंने अटपटा कर दिया. ओके, नाउ आई कैन सॉल्व माय फॉर्मूला अबाउ विच इज 42,000. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वाज ये 17,000 कैसे आया, विच इज व्हाट आई ट्राई टू प्रूव. 18,500 एंड 17,000 इज द बैलेंसिंग फिगर. 42,000 प्लस 17 प्लस 4,000 एंड देन माइनस. सो द इनकम इज 51,000. नाउ वही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ द क्रेडिट साइड 64,500 एंड इफ आई माइनस आई विल गेट द सेम, क्योंकि ऑब्वियसली गलत आएगा तो फिर ये जो किया है वो सही सॉल्व नहीं होगा. 51,000, दैट इज द इनकम फॉर द करंट ईयर. लास्ट टाइम्स क्वेश्चन एंड टुडेज क्वेश्चन आर ऑलमोस्ट सिमिलर. हाँ, द ओनली डिफरेंस वॉज कि ये क्वेश्चन में उन्होंने एडवांस रिसीव्ड दिया था. Okay, current year's received last year and next year's received in the
current year, and this very unique and different manner of giving 18,500 total, and from that we trying to find out the current year's receivable. So I really hope that this particular question and illustration and the explanation of it, okay, कभी कभी थोड़ा अटपटा हो जाता है, but the question is in such a manner कि वो explain करने में थोड़ा टाइम ज़रूर जाता है, which I hope कि आपको समझ में आया है. And if you did understand the explanation, please do like the video, like the lecture, and if you can, share it with as many friends as possible, share it with as many people as possible. Okay, you never know, if you share it with a parent, okay, उनके बच्चे जो CBSE बोर्ड में है उनको ये वाला चैप्टर एंड आने वाले चैप्टर्स काम आ जाएंगे. सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना. आपका दिन शुभ जाए. आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का. ओके, वंडरफुल डे टू यू. गॉड ब्लेस. सी यू वेरी वेरी सून. बाय फॉर नाउ.